Good morning, students. Now we had started Unit 3 of your English Gujarat Board textbook, right? GSEB textbook. And we had reached up to this notice. Reached up to this. New words का जो ये दिया हुआ है आपको. Promote, then childhood obesity, screen time, brand, strategy, pursuit. This article, who is Perry Class? Who is Dr. Thomas Robinson? Both doctors talk about children. Which doctor talks about his own children? Dr. Robinson suggests that parents respond well. Why do you want that? Where did you hear about that? क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कौन बोल रहा है? इन दिस आर्टिकल हु इज़ पेरी क्लास, हु इज़ डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन. डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन कौन है? In one study, Dr. Robinson looked at the efforts of branding by 3 to 5 years old. He is a professor at Stanford University. Dr. Robinson is a professor at Stanford University and a doctor at Lucille Packard Children's Hospital. Right? This is the answer here. जो आपको यहाँ पे पूछा है, who is Dr. Thomas Robinson and who is Perry Class? वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. क्या है? How Advertising Targets Our Children by Dr. Perry Class. Perry Class is also a doctor, right? Food advertising also issues. Who may help you to understand the word and the idea in the story. See, पेरी क्लास के बारे में, मिस्टर पेरी क्लास के बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दिया है, बट ही इज़ द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल. इट सीम्स, राइट? द एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन. ही इज़ द राइटर ऑफ द आर्टिकल दैट यू कैन मेंशन इट, राइट? ओके. उसके बाद एक्टिविटी 2, वर्क विथ अ पार्टनर और अ ग्रुप टू लिस्ट पॉपुलर एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स. what products are they trying to sell? पॉपुलर एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स आपको, आप अमूल का लिख सकते हो. देन आजकल तो बहुत प्रोडक्ट्स है मार्केट में. डेयरी मिल्क चॉकलेट का लिख सकते हो, वो भी आपने लिखा होगा, कुछ मीठा हो जाए, राइट? डेयरी मिल्क चॉकलेट का टैगलाइन क्या है? कुछ मीठा हो जाए. देन अमूल का ऐसा है. देन व्हाट एल्स? फाइंड आउट 2 to 3 more brands like this that you tend to use. पेंसिल का भी अप्सरा एक्स्ट्रा डॉट पेंसिल जो आप यूज़ करते हो, राइट? तो उसका भी एक टैगलाइन है, तो वो आप एड्स देखो और फाइंड आउट करो और यहाँ पे उसका स्लोगन लिखो. दिस इज आई एम गिविंग यू इन होमवर्क, राइट? So let us move further. Choose the slogan that you feel is most interesting. Advisors use slogans to make their customers feel in ways that will make them want to buy. How does the slogan you chose make you feel? आपका फेवरेट स्लोगन यहाँ पे लिखना है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है और वो प्रोडक्ट को बाय करने में आपको ज़्यादा ये करता है, इंस्टिगेट करता है. Share your idea with your classmates. How many different feelings did your classmates write about? ये छोड़ दो, because classmates अभी आपके साथ है ही नहीं. Right? Now let us move on to activity 3. The article How Advertising Targets Our Children says that advertising tries to persuade people. In the activity above, we talked about advertisers using feelings to persuade people. In the article How Advertising Targets Our Children, Dr. Class is also trying to persuade his readers.
What does Dr. Class want to persuade his readers to think and do? क्या चाहते हैं वो लोग कि आप एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो करके प्रोडक्ट्स मत खरीदो, इन्फ्लुएंस हो करके, राइट. आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर ऑफ अबाउट एडवर्टाइजिंग. आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप alert to the ways people try to sell them things. I think it is important for children to understand that sometimes people who want your trust are not really your friends. Right? So this is the answer. क्या question पूछा है यहाँ पर? In the article How Advertising Targets Our Children, Dr. Class is trying to persuade his readers. What does Dr. Class want to persuade his readers to think and do? Dr. Class wants his readers to, क्या लिखा है यहाँ पे? Sorry, not this. To be aware of advertising to be aware of advertising trends and make children aware that all and make children aware that all the people are not trustworthy. Right? Dr. Class uses more than feelings to persuade. He also uses evidence from scientific research. Look very carefully at the article. List all the facts and ideas that come from the research. He also uses evidence from scientific research. Look very carefully at the article and list all the facts and ideas from the research. क्या facts and ideas है वो इसमें से आपको note down करना है. I will share the answer of this afterwards, right? Will give. Okay, now share your ideas with your classmates. Forget it, classmates अभी आपके है ही नहीं साथ में, तो आप क्या ideas share करोगे? So you have to just write your own opinions here. Now let us move on to activity 4. Discuss the questions as a class. Listen to the answers of your classmates. Who paid for this advertisement? अमूल, right? अमूल ब्रांड का है तो अमूल ने पे किया होगा इस एडवर्टीजमेंट को बनाने के लिए. क्या टैगलाइन है उसका? इंट्रोड्यूसिंग श्रीखंड विद रियल बादाम पिस्ता, राइट? ओके, नाउ हु paid for this advertisement? Amul. What is the goal of the advertiser? To sell the product. वो आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, सेल करने के लिए प्रोडक्ट का पिच करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, राइट? टू whom is the advertisement trying to persuade? इंडिविजुअल्स या चिल्ड्रन लिख सकते हो आप. बच्चे जिद करेंगे मम्मी पापा के पास कि हमको श्रीखंड खाना है, श्रीखंड खाना है, और फिर पेरेंट्स विल बाय अमूल श्रीखंड. Do you think that the advertiser achieved the goal? Yes. The advertiser achieved the goal by showing the goodness of the product. Classmates will have different opinions about question 4. How many classmates think that the advertisement worked well for the advertiser? In other words, they would want to buy the product. How many think that the advertisement did not work or they would not want to buy the product or idea, right? 50-50% ओपिनियन हो सकते हैं. कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते. तो वो यू लीव दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस है और इसके लिए आपको क्लासमेट्स के साथ होना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू ओपिनिएट दिस प्रोडक्ट. यूज द पैराग्राफ बिलो टू हेल्प यू राइट अबाउट दिस एक्टिविटी. इन माई क्लास वी लुक्ड एट एन एडवर्टीजमेंट फॉर अमूल. किसका? अमूल श्रीखंड का एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो, राइट? देन
It was created and paid by Amul. Paid for by Amul. It is trying to persuade individuals, adults लिख सकते हो, या adults and children, या children to buy. Then the classmates had different opinions of the effectiveness of the advertisement. Dash classmates thought the advertisement work. How many classmates, for example, if I write 10, thought that the advertisement work, they would want to buy the product. कौन सा है? Amul Shrikhand. Dash classmates thought that the advertisement did not work. 10 classmates बोलेंगे कि advertisement नहीं work है. They would not want to buy the product. या Amul Shrikhand आप direct लिख सकते हो. I think, आप क्या सोचते हो कि whether it is working, it works or it doesn't work, right? That you have to write your opinion. Okay, now next is activity 5. Discuss the questions as a class. Listen to the answers of your classmate, right? Now this is something on save paper, save trees and save the world. This is a kind of notice type of thing, yeah, a banner type of thing which is being placed at a place. Who paid for this advertisement? Some NGO must be there जो आप save trees करवा रहा है, या government होगा जो save trees के banner लगा रहे हैं. What is the goal of this advertiser? To save trees, right? To whom is this advertisement trying to persuade? People. किसको persuade करने की कोशिश कर रहे हैं? लोग जो पेपर यूज़ करते हैं, राइट? तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो किसको टारगेट कर रहे हैं? वो लोगों को जो पेपर यूज़ करते हैं. तो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना आप पेपर बचाओगे उतने ट्रीज़ बचेंगे और उतना वर्ल्ड बचेगा, राइट? Do you think that the advertiser achieved his goal? Yes, because he is placing a good advertisement with the picture of the trees and everything in green, so it is effective, right? Okay, then classmates will have different opinions about question 4. How many classmates think that the advertisement worked well for the advertiser? In other words, they would agree with the idea of the ad. Cross this. How many classmates think that the advertisement did not work? Forget it, right? Thus इसमें भी 10 average numbers we can write down. It can be 8, 7 also, it can be 10, 15 also, right? अलग अलग भी हो सकता है, because this is all opinion based question. जो आपका क्लास का स्ट्रेंथ होगा, अगर हम क्लास में ओपन डिस्कशन करते हैं तो उसके हिसाब से we can count the numbers, but here it's not possible as you are working, as you are studying online. Use the paragraph below to help you write about this activity. In my class we looked at an advertisement for, किसका advertisement है ये? Save paper, right? It was created and paid by dash. किसने पे किया उसको? NGO का नाम आप लिख सकते हो कोई भी. It is trying to persuade individuals, और क्या लिख सकते हो? people to save trees, या save paper. save paper आएगा, save paper. My classmates and had different opinions of effectiveness of this advertisement. Dash classmates thought the advertisement worked. Again, here also 10% students thought and 10% would not agree with that. That percentages you can write because it is completely opinion based. Dash classmates thought that it did not work, right? So forget it. They would not agree with that. नोटिस लिख दो आप यहाँ पे, या सेव ट्रीज का ये लिख दो. आई थिंक, व्हाट यू थिंक? येस इट वर्क्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. अगर आपको लगता है कि ये वर्क करेगा तो से इट वर्क्स, राइट? अगर लगता है नहीं करेगा तो देन लीव इट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू एक्टिविटी 6. वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन or doing. For example, the verb grow means to become larger. English has many phrasal verbs. Phrasal verbs need a small word, a preposition with them to make their meaning. For example, grow means to become larger, but grow up means to mature. Look at the article now. How advertising targets our children. Carefully find phrases where the preposition seems to be the part of the verb. Underline these phrases. How many phrasal verbs did you find?
कंपेयर योर नंबर्स टू द नंबर्स ऑफ योर क्लासमेट्स हु रोट, फॉरगेट इट. फ्रेजल वर्ब्स अलग अलग दिए हुए हैं. टू बिकम लार्जर, लार्जर मतलब बड़ा होना. ग्रो, टू मैच्योर, राइट. ये सारे दो दो वर्ड्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, एक ही वर्ड का मीनिंग बोलते. दे आर कॉल्ड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स. माई क्लासमेट नेम डैश फाउंड द मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स. ही, शी और ही फाउंड डैश फ्रेजल वर्ब्स. ये छोड़ दो, बिकॉज आपको क्लासमेट्स में डिस्कशन किए बिना ये पता नहीं चलेगा. लुक केयरफुली एट द फ्रेजल वर्ब्स योर क्लासमेट फाउंड. डू यू अग्री दैट दे आर ऑल करेक्ट? Which phrasal verbs did your classmate find that you missed? Write them here. जाने दो इसको. If you found the most phrasal verbs in your class, congratulations. Help your classmate understand all the phrasal verbs in the article. Okay, now let us move on to activity 7. Activity 7 is try this common type of activity. Choose the correct option to replace the explanation in the bracket. That is, नंबर 1, पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ. अब ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है? लुक एट, लुक फॉर और लुक आफ्टर, मतलब ध्यान रखना. सो इट इज़ लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, राइट. माई सन सेज ही विल स्टॉप डैश टेलिंग लाइज. स्टॉप, गिव अप. गिव ओवर, गिव इन नहीं होता है. ही विल गिव अप मतलब नहीं करेगा अभी से, राइट. I'll call the shop to discover dash the price of the product. To find out the price of the product. You mean return. Return का give back, pay for or take in. Say give back. The library books after reading. Now you try to be the teacher. Choose one of the phrasal verbs from your list in the activity on phrasal verbs and write a fill in the blank question like the above one. ये आपको करना है वो, that's not possible. You have to form the question. Discuss the fill in the blank questions with the classmate. So leave it. Leave all these activities. Now we shall move on the next activity 8 from advertising poem. Isn't it funny? Why is it? Written by the Douglas Galby on June 17th 2012, filed in category Economics of Attention. By 1923, US newspapers and magazines were promoting advertising with a text that is now called the advertising poem. Why is it? A man wakes up after sleeping under an advertised blanket and an advertised mattress. Underline blanket, advertised and mattress. Pulls off advertised pajamas. Bathes in an advertised shower. Shaves with an advertised razor. Brushes his teeth with an advertised toothpaste. Razor को underline करो, toothpaste को underline करो. Washes with advertised soap, puts on advertised clothes, drinks a cup of advertised coffee, drives to work in an advertised car, and then refuses to advertise, believing it doesn't pay, right? Refuses, advertise, underline karo. Believing it doesn't pay. Later, when business is poor, he advertises it for sale. Why is it? The poem is why is it? It is an advertisement, right? जब वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो काफ़ी सब सेल हो रहा है, जब नहीं कर रहे हैं तो सेल बंद हो जाता है, राइट, कम हो जाता है. Who paid for और क्रिएटेड दिस एडवर्टीजमेंट? किसने पे किया था और एडवर्टीजमेंट बनवाया था? फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पोएम इजंट इट फनी वाई इज इट बाय Douglas Galby. So he is the person who is doing the advertisement. What is the goal of the advertiser? What is the goal of the advertiser? To show that advertising helps in sale. And to whom is the advertisement trying to persuade? किसको persuade करने की कोशिश कर रहे हैं? A man wakes up after sleeping under the advertised blanket under an individuals लिख सकते हो. किसको? Individual यानी people, लोगों को.
इंडिविजुअल्स ऑल्सो यू कैन राइट, पीपल ऑल्सो यू कैन राइट. किसको टारगेट करें? लोगों को. ओके. Now activity 9 we shall do next time. We stop here today. Write all the points as instructed and I have made you underline the words. ये इसमें ही लिख देना, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. और जो ये ब्लैंक्स मैंने करवाए हैं वो इसी में लिखो और अंडरलाइन किए हुए हार्ड वर्ड्स को नोटबुक में लिखना है. राइट. फ्रॉम एक्टिविटी 9 वी शैल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. वी स्टॉप हियर.